ऑल आर केम, सब आ गए? ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल आर गुड. ओके, अगेन तपस्या. तपस्या, व्हाट आई से बेटा, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ एक जगह पे. ओके, और क्लास के बाद खाना, आपको जो भी खाना है ना आप क्लास के बाद खाइएगा. ओके, so my dear student, in last class we have learned chapter 3. Okay, and today we will learn some points. Our first point is how to insert page border in your document, page color in your document. Okay, and changing changing case option. We will use changing case option. So my dear student, we will learn one by one. Okay, so you can see here our first option is how to change how to apply changing case on your document. So my dear student, you know what is a changing case option? Hmm? Changing case option means um, uh, student, you imagine that you have typed an entire page in a small letter. Okay, and now you want to contents of this page in capital letter. You don't have to retype the entire page again. Okay, so you will just have to use the change case option, like upper case. Okay, lower case, sentence case, toggle case, कैपिटल इच वर्ड. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? सपोज आपने क्या लिखा किया, एक कंप्लीट एक पेज बनाया, और आप वो पेज में जितने भी आप लेटर्स जो भी कंटेंट्स आपने टाइप किया सब लोअर लेटर पे है. अब आपको सबको क्या करना है, अपर केस में मतलब कैपिटल लेटर में टाइप करना है. तो आप फिर से उसको टाइप नहीं करना चाहते, देन यू यूज, उसके बाद आप क्या यूज कर सकते हैं, ऐसी कुछ कंडीशन पे आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, यू यूज चेंज केस ऑप्शन. सो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वी टाइप सम लेटर और सेंटेंस और वर्ड. व्हाट हैपन अवनी? यस अवनी. मैम लास्ट क्लास में अटेंड नहीं कर पाई थी मैम, तो रिकॉर्डेड वीडियो भी पोर्टल पे अपलोडेड नहीं है। ओके अवनी, नो इशू. लास्ट क्लास जो आपने नहीं अटेंड किया था ना, मैंने जो चैप्टर थर्ड का जो स्टार्टिंग था वो मैंने जस्ट रिपीट कराया था, क्योंकि लास्ट क्लास बहुत कम बच्चे आए थे ना, तो जस्ट मैं थर्ड चैप्टर रिपीट करवाया था जो आपने और भी पहले पढ़ चुका है. ठीक है, और यस मैम। जो भी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है वो मैं अपलोड कर देती हूँ. ओके बेटा. यस मैम। So my dear student, you can see here, this is your document. Okay, and all word, you can see here all word is in स्मॉल लेटर. ओके, सब आप देख सकते हैं सारे स्मॉल लेटर में. अब आपको इस सारे वर्ड को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट यू सेलेक्ट योर डॉक्यूमेंट, एंड देन you go to font group, and you click on here. आप देख सकते हैं चेंज केस दिख रहा है आपको, एक कैपिटल ए लिखा होगा, एक स्मॉल लेटर में ए लिखा होगा, दोनों वर्ड साथ में होंगे. ये सिंबल दिख रहा है आप लोगों को, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. दिस symbol is known as change case symbol. Okay, so you press here and you can see here one list is up here. First is sentence case. My dear student, sentence case means it capitalize द फर्स्ट कैरेक्टर इन द सेंटेंस. ये क्या करेगा, सारे जो भी सेंटेंस लिखे उसके उस सेंटेंस के फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा उसको वो कैपिटल कर देगा. नाउ नेक्स्ट इज लोअर केस. लोअर केस मीन्स इट कन्वर्ट ऑल द सेलेक्टेड कैरेक्टर टू लोअर.
ओके, लोअर केस मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या करेगा बेटा, सारे सेंटेंस को लोअर केस में बदल देगा। ओके, नेक्स्ट इज अपर केस। अपर केस मीन्स इट कन्वर्ट द टेक्स्ट टू अपर केस। क्या करेगा, सबको अपर केस में कन्वर्ट करेगा। यू कैन सी हियर ऑल टेक्स्ट कन्वर्ट इनटू अपर केस। ओके, लोअर केस भी करके दिखा दू। ऑल कैरेक्टर और वर्ड और सेंटेंस कन्वर्ट इनटू लोअर केस। ओके, capital each word means it capitalize the first character of each word। हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, कैपिटल। एंड टॉगल मीन्स ये अपोजिट हो जाता है, फर्स्ट वर्ड इज स्मॉल लेटर और बाकी क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर। ओके, सो दिस इज योर चेंज केस ऑप्शन, दिस इज योर चेंज केस ऑप्शन। ओके, done। Now come to next question. What is a how to apply page border on your document? So my dear student, you already know what is a page border। आप जानते हैं ना पेज बॉर्डर क्या होता है, जो आपके पेज के साइड में जो अलाइनमेंट होती है उसमें जो हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं, दिस इज नोन एज पेज बॉर्डर ऑप्शन। तो आप पेज बॉर्डर ऑप्शन के लिए फर्स्ट आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू गो टू पेज लेआउट tag, you go to page layout tag, and then one ribbon is appear. In this ribbon you select page border option। So my dear student, you can see here this is your page border option, layout, and then you go to ribbon। Okay, and then you select page border option। So my dear student, you can see here one box is appear। Okay, अब आप यहाँ से ऐसा कोई भी एक बॉर्डर ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ओके, देन यू प्रेस ओके बटन। सो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन सी हियर योर बॉर्डर इज अपीयर। आप देख सकते हैं बॉर्डर आपको दिख रहा है। और भी अट्रैक्टिव बॉर्डर बनाने हैं तो यू गो टू हियर आर्ट। आप देख लीजिए यहाँ पर आर्ट में जाइए एंड यू सेलेक्ट एनी बॉर्डर, press OK button। You can see here your border is appear। Yes Janya, what happened beta? Ma'am, your sound is coming slowly. Okay, yes Avni। मैम मैम मेरा जो लैपटॉप है मैम, मैं जिसमें क्लास करती हूँ ना मैम, उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज है और वर्ड ऐप है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट 2007 नहीं है, तो ये सब वर्ड ऐप पे भी आता है ना? यस बिल्कुल, आप उसमें भी अप्लाई करके देख सकते हैं, सब में होता है ये। यस मैम। ओके, यस व्हाट हैपेंड निष्ठा? तो मैम बॉर्डर का एक बार फिर से बताओ ना मैम, बॉर्डर कैसे? ओके 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 ओके, यस व्हाट हैपेंड सुहानी? यस सुहानी। मैम, हाउ टू इंसर्ट पेज कलर? Okay, wait. So, student, you can see here again how to apply page border on your document. Student, if you want to apply any border on your page, first you can see here there is no border। Okay, यहाँ पर कोई भी border नहीं है। And if you want to apply the border on your page, you go to page layout option and then you select page border, you select page border option। Okay, and अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसा, देन प्रेस ओके बटन। अगर ऐसा नहीं चाहिए, कुछ और डिजाइन या कुछ और स्टाइल चाहिए, तो आप किस में जाएंगे, पेज बॉर्डर में यू कैन सी हियर आर्ट ऑप्शन, दिख रहा है आपको आर्ट ऑप्शन। ओके, यू प्रेस and
आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे, देन प्रेस ओके बटन. सो यू कैन सी हियर योर बॉर्डर इज अपीयर. दिख रहा है आपको? योर बॉर्डर इज अपीयर. ओके. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू apply page color on your document. Student, if you want to add page color on your document, if you want to add any color on your page, you click on page layout menu and you can see here पेज बॉर्डर के बगल से देखिए पेज कलर ऑप्शन दिख रहा है. ओके. सो यू सेलेक्ट पेज कलर एंड यू कैन सी हियर. दिख रहा है आप कोई सा भी ऐसा कलर? सुहानी, बेटा सुहानी, you can see here this is a page color Yes, option. ma'am. Okay, done. Yes, Done. So my dear student, here your chapter 3 is completed. Now come to book exercise. So student, please open your book. My dear student, please open your book. Page number student, please open your book. Page number 34. Student, please open your book. Page number 34. Page number 34, second paragraph, multiple choice question. You can see here, this is your question. Student, please open your book, page number 34. Page number 34. Dear students, please open your book, page number 34, multiple choice question. Second paragraph, multiple choice question. Okay. If you have computer book, yes, Suhani, what happened, beta? Ma'am, no doubt. Okay. What happened, Vriddhi? What, beta, Vriddhi? Vriddhi, your voice is not clear. What you say, beta? Can you message me, please, Vriddhi? Beta, Vriddhi, your voice is... Vriddhi? Yes, Tapasya, what happened? What happened, Tapasya? मैम पेज नंबर 34. Page number 34. मैम ये वाला क्या Yes, this one. Yes, beta. Okay. Yes, very good. मैम What, beta? Yes, multiple choice question. Now we will do multiple choice question. Okay. Vriddhi, you have any query? You have any doubt? Please message me. Okay, Vriddhi. You tell the answer. Okay. But your voice is not clear. So, Vriddhi, आप message type कर सकते हैं. Okay. Okay. So, my dear student, you can see on your book page number 34, multiple choice question. My dear student, your first question is, dash is a, sorry, is a dash icon. अब you can see here, ये जो capital A दिख रहा है वो कौन सा icon है? So option is flip art, flip color, fill color and word art. So student, here the correct option is option C, word art. Okay, this is a symbol of word art. This is the icon of word art. Okay, now come to second question. MS Word is a part of dash package. MS Word is a part of dash package. MS Office, MS PowerPoint or MS Window. So my dear student, here the correct option is MS Office. Okay, please कंप्लीट योर वर्क. आप अपना वर्क कीजिए और इसको भी कंप्लीट कीजिए. ओके, नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन. शेप्स इज प्रेजेंट इन डैश ग्रुप. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, हियर ऑप्शन इज टेक्स्ट, टेबल्स एंड illustration. Okay, so the correct option is option C, illustration. Yes beta, Suhani. Ma'am, can I tell answer? Yes.
Okay. Ma'am of chapter 3. Yes, chapter 3. Student, chapter 3, page number 34. Multiple choice question is completed. Now come to page number. Now come to page number 40. Page number 40. Okay. Ma'am, can I tell? Wait. Student, please, you can see on your book, page number 40, first paragraph, multiple choice question. Our first, Tapasya, what happened, beta? If you have any doubt, if you have any query, please ask me. है ना? Concentration किया करो बेटा. Okay? Our first question is, after des object, they move as one object. Here option is ungroup, grouping and inserting. What is the answer, Suhani? Ma'am, first. First, no beta. No, ma'am, first question का ना. Yes. After des object, they move as one object. Option is ungroup, grouping and inserting. What is the answer, beta? Yes, Labdi, you know the answer, beta? Yes, Labdi? Your voice is not clear, beta. Avni, you know the answer, beta? Avni, Nishtha, Tapasya. Yes, Avni, Nishtha, Tapasya. Ma'am, grouping. The answer is grouping. Yes. The answer is grouping. Labdi, your voice is not clear, beta. The answer is grouping. Okay. Now come. Yes. Now come to third question. Uppercase means des letter. Small, capital or upper. Uppercase means des letters. Small. Yes, Tapasya. Tapasya, you know the answer, beta? Yes, ma'am. What is the answer? Ma'am, upper. Upper. Yes. The correct Ma'am, answer upper. is upper. Option C. Okay. And come to second question. Sorry, मैं second question बताना भूल गई थी. Des case capitalize the first character in the sentence. Des case capitalize the first character in the sentence. Toggle, upper and sentence. Ma'am, sentence. Yes, the correct answer is toggle. sentence. No, beta, the correct option is sentence. The correct option is sentence. Okay. Okay. Now come to next page. Your next page is page number 42. Next page is page number 42. So, my dear student, you can see on your book page number 42, section A. My dear student, section A, you can see question number A, think and oral question. This is your oral question, but you write the answer on your book. आप इसका आंसर आप अपने बुक पे लिखेंगे. So, my dear student, our first question is, what is word art? Okay, what is word art? So, my dear student, you know what is a word art? आप लोग जानते हैं word art, है ना? Word art means, you can see here the answer. Wait. My dear student, you can see here the answer. You can see here the answer. Word art is the option in MS Word. Please write down the answer on your book or your rough copy. आप अपने rough copy में भी लिख सकते हैं, या तो आप book में अगर space है आप वहाँ भी लिख सकते हैं. Okay, एक blank page में लिख के आप उसको अपने book में paste भी कर सकते हैं. Okay, but you write the answer. Our first question is, what is word art? So, my dear friend, you can see here the answer. Word art is the option in MS Word that is used to insert attractive text in a document.
word art, students, word art is the option in MS Word that is used to insert attractive text in a document. Okay. Now come to next question. How do you add different shapes in your document? So you can see here, this is your answer. This is your answer. To add shapes, click shapes command from the illustration group and choose a shape. Then drag and draw the shape. Okay. Again, I repeat the answer. To add shape, click shapes command from the illustration group and choose a shape. Then drag and drop the shapes. Okay. Now come to quiz part. Name the change case option to reverse the existing case. So my dear student, here the answer is toggle case. Here the answer is toggle case. Okay. Now come to next question. Name the three command of the header and footer group in the insert tab. So the answer is header, footer and page number. Header, footer and page number option. Okay. Again I repeat. Name the change case option to reverse the existing case. So the answer is toggle case. Second, name the three commands of the header and footer group in the insert tab. So the answer is header, footer and page number option. Okay. Now come to multiple choice question. Command is present in dash tab. एक symbol दिख रहा है आपको? This symbol, command is present in dash tab. Option is home, insert and view. So you can see here the answer is insert. The answer is insert. Okay. Now come to next. When you draw a shape, a new dash tab automatically appears on the ribbon. So my dear student, here option is home, format and none of this option. So the correct option is format. Beta Tithi, please write down the answer. Beta Tithi, please write down the answer. Tithi, I'm audible, beta. Tithi? Beta Tithi, please write down the answer. Yes, ma'am. Where is your computer book, beta Tithi? Mama. Ma'am, I cannot hear you. Why? Ma'am, your voice is not clear now. Okay. बेटा तिथि, where is your computer book? मैं मैसेज में टाइप करके दूं आपको? Yes, ma'am. So my dear student, now come to third question. Dash option applies. Ma'am, Yes. here is my computer book. Okay, so open your computer book or complete your work, beta. Question answer, multiple choice question, fill in the blanks, quiz, think and oral question. Please complete your work, तिथि. एग्जाम में क्या लिखेंगे अगर Okay, बुक ma'am. कंप्लीट नहीं होगा? Okay, very good girl. Okay, ma'am. So my dear student, third question is dash option applies border to the entire page. Option is border, page border and header and footer. So the option is option B, page border. Okay. Now come to question number 4. Janya, beta complete your work. Header and footer are inserted at the dash of a document. So here option is top and bottom, left and right and center. So the correct option is option A, top and bottom. Now, what happened, Janya? Ma'am, I have done. Very good girl.
So yes, Nishtha, what happened, beta? मैम एक बार फिर से बताओ ना मैम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का. Okay. Yes, Suhani, what happened? मैम नो डाउट. Okay. Yes, Vriddhi. Yes, Vriddhi. What, beta? Vriddhi, maybe. Yes. Yes, Vriddhi. मैम ये आप जो स्क्रीन में जो मैम वो पोर्टल में अपलोड है ना. Yes, बेटा. Yes, बेटा, Vriddhi. हाँ, वो पोर्टल में मैंने अपलोड कर दिया है ना? ओके. एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैम यस. फर्स्ट का इंसर्ट है मैम, सेकंड का फॉर्मेट मैम, थर्ड का पेज बॉर्डर और मैम फोर्थ का टॉप एंड बॉटम है. यस. यस, बेटा. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आप देख सकते हैं मैंने वो जो अभी आपको जो स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ वो भी सेम वैसे ही आप जो मैं करा रही हूँ ना ये वही है. ओके. यस तपस्या, व्हाट हैपेंड? मैम मैंने चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर मैम मैंने कंप्यूटर की कॉपी में मैम मैंने लिख लिया है. ओके. ओके, गुड. यस रिद्धि, व्हाट हैपेंड? एक्सक्यूज मी मैम. Yes, Vriddhi, your voice is not clear, beta. Can you speak loudly? Yes, ma'am. Good of Vriddhi, That structure and paste into the document. How we have to do a shadow part. ओके ओके, वो भी बताऊंगी मैं. ठीक है, पहले ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होने दो फिर वो बताती हूँ. ओके बेटा. ओके, so my dear student, you can see here your question D. Match the following commands with their icons. So my dear, yes, Janya, what happened? Janya, what happened? Ma'am, your sound is very coming slowly. Okay. So my dear student, you can see here, this is your question number 4. This is your question number 4. To insert shape. So the answer is here. You can see here, the answer is here. ये वाला जो box दिख रहा है, this is your insert shape option. Okay. Now come to next, to insert picture. So you can see here, this is your picture symbol. Okay, picture symbol icon. This is your picture icon. Okay, this is your insert shape icon. Please you complete the work. आप अपने काम को complete कीजिए बेटा. यहाँ से देख के you can see here, to insert page number. This is a page number icon. This is page number icon. Okay, to add word art. So you can see here, this is your word art icon. And to add clip art, this is a clip art option. Sorry, this is a clip art icon. And last one is to apply change case. So this is a change case icon. Okay, now come to short answer question. Okay, so my dear students, in section B, very short answer question. Your first question is, what is clip art? So my dear student, your answer is, clip art is a gallery of ready-made picture that can be inserted directly in the document. Clip art is a gallery of
ready-made pictures that can be inserted directly in the document. Okay, come to second question. What are shapes? Shapes are, your answer is, your answer is, shapes are group of ready-made shapes that can be inserted directly in the document. Okay, please write down the answer. Now come to second question B, short answer question. Write the steps to change the case of text, selected text. So you can see here the answer. Step 1, select the text. Step 2, click home tab. Step 3, click change case from the font group and select the required case from the list. Okay. Now come to second question. How do you group object in MS Word 2007? So my dear student, you can see here your answer is to group object. Select them and right click from the shortcut menu. Click grouping, group option. Okay. Now come to long answer question. Write the steps to insert word art text in our document. So my dear student, you can see here the answer. First step, click the insert tab on the ribbon. Second step, click word art from the text group. Third step, select the style of your choice from the word art gallery. Fourth step, choose the font and size of your text from the dialog box. Fifth step, type the text. Sixth step, click the OK button option. Okay. Now come to last option. Last question. How do you insert symbols into your document? So here answer is step 1, place the cursor to insert the symbol. Second step, click the insert tab. Third step, click symbol from symbols group. And fourth step, select the symbol to insert. So my dear student, here your chapter 3 is completed. Okay, next class we will learn chapter 4. Okay, and my dear student, please complete the book exercise. आप लोग के पोर्टल में मैंने ये अपलोड कर दिया, आप वहां से भी देख के लिख सकते हैं. ओके, सो हियर टाइम इज ओवर. सो गुड बाय एवरीवन. बाय बाय. इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट, आप मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, सो बाय बाय.